2 दिन एक रूटीन को फॉलो करते हैं, फिर 2 दिन रेस्ट करते हैं, फिर से उस रूटीन को फॉलो करते हैं, तो फिर कंटिन्यूटी ब्रेक होते ही फिर आपका पूरा डिसिप्लिन है वो सब भी ब्रेक होता है। Jai Hind, Pritam. जैन मेघना। Okay, first of all, congratulations on your recommendation. थैंक यू। And where are you from, Pritam? मेघना, आई एम फ्रॉम झुंझुनू, राजस्थान। Okay, so the very first question everyone want to know that why you specifically chosen to join an Air Force, Indian Air Force. As Meghna, I belong from a district where I see everywhere the courage of defense forces. But specifically for the Air Force, I get motivation from my village. My grandfather and my uncle has already served in the defense forces. But I want to share one incident of my life from where I get inspiration to join specifically the Indian Air Force, not the other forces. Uh, in my childhood days, we slept in the choke of my house. So whenever I see the other aircraft which was fly from over of my house, I get motivation to fly in the sky. But as my whole family is from the defense forces, so Indian Air Force is a double opportunity for me. So I can also get the experience to get into the forces, as well as I can also become a pilot in Indian Air Force. Yeah. So I choose Indian Air Force as my career. So since childhood, you decided that you want to join an Air Force. Yes, Meghna. So what was your strategy towards the written examination? Did you prepare parallelly for the SSB as well, or prepared for written examinations? As far as written is concerned for NDA, specifically for the NDA, I completed my 12th class from mathematics. So I was good in mathematics. So I was a bit confident that I would score more marks in the mathematics in comparison of GAT. Math was my hero subject, and the GAT is all about my passing subject. So if you want to clear the NDA examination, so you should be a hero subject, and other one is passing subject. So that's why I worked on mathematics. I took guidance. I worked on PYQs and mock test. PYQs and mock test are backbone of any written examination. So I worked on that, and successfully I cleared 4 NDA written examination back to back. Yeah, And that's for great. and for Yeah. SSB, I didn't give specific time to SSB, but parallelly I work on my um, personality. I improve my daily routine. I work on my communication skill, as well as I also know little bit about SSB, that what is SSB, about its procedure, and all these things. So did you prepare yourself, like online and offline, for written examinations? Like in I completed my 12th in COVID time, in COVID pandemic. I was from COVID batch, so the offline coachings were not available at that time. So I started to study from YouTube. I searched many channels over there, and I took guidance from there only for written examination, and I prepare for written examination from self study at all. I buy some books from online, and I prepare from there. Okay. So you have been 3 times for SSB, right? So this time, how you prepared yourself, like how you improved your personality more into? If I talk about my previous 3 SSBs, as I was skin out in my first attempt, then after I got confidence out in other 2 attempts. Okay. So the very big drawback, which I think that I had in my previous SSBs, was confidence. And my confidence lacked in other 3 SSBs, but this time I worked on it. After my screening in this SSB, I was very confident that this time I will make it. I will be recommended. So I worked on my confidence as well as communication skills, and all these shortcomings which I observed in my previous SSBs. I worked on them. I keep practice about this thing, and this time So the result was in my favor. you expected your recommendation this time then?
Yes, Meghna. This time I was very confident that this time I will make it. So can you just share your experience of your stage one? Yes, as everyone is aware about stage one, that there are two tests conducted on stage one. First one is OIR and second one is PPDT. My OIR was very good. I thought that I had OIR one ranking from my experience. I attempted all these questions and I prepared a lot on Yodha SSB Academy. Like I want to thank Reddy sir for the OIR test. He gave around 3 to 4 mock tests every day. He used to tell about the how to attempt OIR and the importance of OIR in SSB. For the PPDT, like we practice a lot of PPDT on every weekend. We practice at Yoda SSB. Many times Brigadier Venu sir and all assessors took classes of PPDT. My PPDT was very good. Like I made a story around handicraft item development in village. And my theme was selected as a group theme, and I nominated as a group narrator in the PPDT in the PPDT discussion. So it was a very good discussion from my side. After my screening, I was also like uh, ये feeling आई थी कि इस बार तो screening तो बन गया. But because when the time that 2 or 3 persons nominated me as a group narrator, that feeling was very good. And I was thinking Yeah. that screening हो जाऊंगा. Yeah, I heard that maximum number of students have just nominated you as a group member and except one. So what was that? Can you share that experience with us? Yes, Meghna, that was a very good experience about GTO task. In the command task, we were total 8 group of students after screening. So Yeah. out of eight, seven nominated me as their subordinate in command task. Uh, because when I talk from them. Everyone was saying that I was the man. I was very friendly with them. I after all tasks, हम सभी बैठते थे. We watch the TV. Uh, we talk about our previous SSB experiences. We talk about our life, about experiences, share experience with each other. So this was the time where I got the time to make a bond with my other group mate. So this helped me that they nominated me as a subordinate, and my performance in PGT and the IGT was also very good. They observed that I was solving the maximum number of structures, so they nominated me as a subordinate. That was a very good moment for me in GTO. And I also want to share a little bit little bit thing about GTO that moment about city. One of my groupmate told me that GTO sir ने उससे पूछा when he tell that he will not nominated me as subordinate. Then GTO sir asked him कि आपने chest number 15 को क्यों nominate नहीं किया? Then he remembered suddenly. Then after he nominated me. So then when he shared this experience with me, that time I was also my confidence also boosted that my performance in GTO is good and So I will. you gave your 100% with all of them there. You Ah, had good yes. experience over there. So how about the psych test? As it is main, everyone says that it is a main test, and it is depend. Everything depends on psychology. So how your psychology went on? Like how you prepared everything? Uh, for psych test, in my previous three SSBs, my psych test was not up to the mark. But this time I was confident that it is up to the mark because the main thing in my psych test is in the previous SSBs. Mostly I wrote preconceived ideas over there. I have practiced a lot of psych tests around. I have practiced around 100 to 200 pictures, and I have written around 2 to 3 stories on one picture. So I have a good idea about the themes. So whenever I see any pictures, generally I pick a theme from my preconceived themes, then just wrote it. So this was my biggest mistake in my previous SSBs. But this time I didn't repeat it. I wrote a theme which is relevant to the picture, and I observed the picture very carefully and clearly. And for the psych Yeah. test, I want to thank.
uh, Colonel Kurian sir for the psych test because he guided me a lot. He like अभी मुझे अभी भी याद है when he was giving the psych review. Yeah. He pointed out the same thing which I am mentioning here, like कि आपने preconceived theme बहुत लिखी थी. So he guided me a lot for psych test. So biggest improvement in my psych test, to not write preconceived theme and to write themes which is relevant more to the picture and which is related to our day to day life. Like Yeah. हमें कभी भी थीम को कभी इतना हाइप नहीं कर देना कि वो अपनी डे टू डे लाइफ से बाहर निकल जाए. If we are making theme around our day-to-day life, so it is good in my opinion. Oh, that's great. That's great, actually. And can you share your conference experience? I heard that uh, that went for only 1 to 2 minutes, but so can you share that experience with us? Like for any repeater, conference is a very important thing. Whenever you met any repeater, he told that he get idea of your recommendation and conference out from your conference timing. So after my conference, waiting time is around 3 to 4 minutes, not more than 4 minutes. So Mhm. I was a little bit thinking about it, like कि या तो मैं सीधा recommend दूं या फिर सीधा conference आऊं. But when I entered into the conference room, uh, they ask only 2 to 3 questions. How would you stay? Any suggestion? And thank you. Very general questions. So I was after conference, I was only thinking about my conference time and all these things. But then after I uh, thought about my previous task, and I was confident that कि अभी तो जैसे डीएसओ सर ने एंट्री की रिजल्ट जी. अनाउंस करने के लिए, देन आई वाज वेरी एक्साइटेड, लाइक एक्साइटमेंट. So I can't express in words about my excitement when DSO sir is announcing the result. What was your parents' reaction when you told them that you got recommended? Like जब मैंने अपने पेरेंट्स को रिकमेंडेशन बताई, बिकॉज आई आई गेट ओनली अराउंड 1 or 2 minutes to inform my parents about conference that I had recommended. So the Hmm. expression was very good. Like सबसे ज्यादा मम्मी खुश हुई थी घर के अंदर कि मैं रिकमेंड हो गया. फिर पापा को कॉल किया तो खुशी इतनी थी कि बाद में कॉल पे कॉल आ रहे थे. सो आई टॉक अराउंड 1 or 2 hours टू माय फैमिली. I was only talking about my recommendation journey, was how was my task like मेरे टास्क कैसे गए, कैसा Mhm. क्या एक्सपीरियंस रहा, अबाउट फ्रेंड्स के बारे में. तो वो तो बहुत मेमोरेबल एक्सपीरियंस था. अराउंड 1 or 2 hours आई ओनली टॉक टू माय फैमिली. तो आपको क्या क्या दिखा कि रिकमेंडेड कैंडिडेट में और नॉर्मल कैंडिडेट में ऐसा क्या डिफरेंस है? लाइक सबसे पहला डिफरेंस जो मैंने ऑब्जर्व किया वो है कॉन्फिडेंस. बिकॉज आपके अंदर वो क्वालिटीज हैं. यू हैव ऑल दीज 15 OLQs, बट मेन थिंग है कि आप जिस टाइम पे उनको रिवील करना, आपको अंदर से उनको निकालना, आपको शो करना है सेसर को, उस टाइम पे वो आप शो नहीं कर पाते हो. सो दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस. इफ यू हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो आपको अंदर से ये फीलिंग आ रही है, गट्स फीलिंग आ रही है कि आपके अंदर क्वालिटीज है और आप परफॉर्म कर रहे हो, तो वो क्वालिटीज अपने आप निकलेंगी. इसका सबसे एक मेरा सजेशन है सभी से कि आप जितना नॉर्मल हो सके उतना नॉर्मल एसएसबी में रहिए. आप एसएसबी इज नॉट लाइक वेरी डिफरेंट थिंग. लाइक जैसे जीटी की बात मैं करूं, जीटी के अंदर ग्रुप टास्क है. इफ यू आर परफॉर्मिंग ग्रुप टास्क लाइक यू आर प्लेइंग अ गेम, so it will it will beneficial you. We I am doing the GTO task like I am playing cricket. जब भी हम क्रिकेट खेलते हैं, so our team should be above ourselves. अपने से ऊपर अपनी टीम को होना चाहिए. वैसे ही अगर आप जीटी में अपने से ऊपर अपने ग्रुप को रखते हो, so it will directly beneficial you and others will also listen your Yes. points in the GTO. So it will benefit you. And then the second thing, like don't show yourself that you are a recommended material type student. लाइक आप अपने आप को ग्रुप से अलग मत करो. आप ऐसा कुछ मत करो कि वो आपको ग्रुप से अलग स्टैंड करता है. आप नॉर्मल चीजें करो. अगर आप आर्टिफिशियल तरीके से ऐसा शो करोगे कि आप में वो क्वालिटीज है, तो आप आउट हो. आपको बिल्कुल भी आर्टिफिशियल नहीं रहना, क्योंकि वहां पे इतने सारे टास्क हैं. अगर आप एक में आर्टिफिशियल हुए, सेकंड में आप अलग टाइप से अपनी क्वालिटी शो कर दी, तो फिर वो मिसमैच हो जाएगा. दैट इट विल गो अगेंस्ट यू.
If you are natural, then it will directly benefit you in all your tasks. Okay. तो जो ये जो तुम्हारा प्रोसेस था एसएसबी प्रिपरेशन का, डेली रूटीन हो गया, इंटरेस्ट, हॉबीज वगैरह, तो तुमने ऐसा क्या डिफरेंटली किया जब इस प्रिपरेशन एसएसबी प्रिपेयर करते समय? खुद में ऐसा क्या पर्सनालिटी में चेंज ऐसा दिखा तुम्हें खुद में? इट इज समथिंग Yes, डिफरेंट आई वांटेड टू आस्क यू. yes, Meghna. Like one biggest thing which I changed in my this attempt was continuity. प्रीवियस एसएचपी में भी मैंने वही डेली रूटीन था, इस बार मतलब थोड़ा मॉडिफाइड था, थोड़ा चेंज किया था, बट इतना चेंज नहीं था, बेसिक वही था. बट प्रीवियस में हम 2 दिन एक रूटीन को फॉलो करते हैं, फिर 2 दिन रेस्ट करते हैं, फिर से उस रूटीन को फॉलो करते हैं, तो फिर कंटिन्यूटी ब्रेक होते ही फिर आपका पूरा डिसिप्लिन है वो सब भी ब्रेक होता है. जी. माई डेली रूटीन वॉज आई वेक अप एट 5 o'clock इन मॉर्निंग. 5 उसके बाद में आई गो फॉर रनिंग, आई डू फिजिकल एक्सरसाइजेस. आज भी मुझे याद है रेड्डी सर हमें बोलते थे कि आप स्क्रीनशॉट शेयर कीजिए रनिंग का, सो आई ऑलवेज डिड इट. मैं उनको रोज शेयर करता था. सो इट वाज लाइक वेरी बेनिफिशियल फॉर मी, लाइक फिजिकल इंप्रूव हुआ, सो इट हेल्प्ड मी इन जीपीओ टास्क. इंटरव्यू के अंदर भी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है जब आप बताते हो कि आप फिजिकल एक्सरसाइजेस करते हो, देयर इज अ पॉजिटिव इंप्रेशन वो रहता है, पॉजिटिव थिंग है. तो फिर उसके बाद में मैंने अपनी एसएसपी पे प्रिपरेशन वो सब तो चलता आप करते हो, बट यू शुड रीड न्यूज़पेपर. न्यूज़पेपर इज मस्ट फॉर दोज who says that his or her communication skill is weak. If you read newspaper, it will help you to get to read new words. लाइक जैसे न्यूज़पेपर में अलग अलग एरियाज होते हैं, स्पोर्ट्स, अपना हम्म. पॉलिटिक्स होता है, वर्ल्ड अफेयर्स होता है. सो देयर इज सम वर्ड्स स्पेसिफिकली फॉर सम एरियाज, जैसे कुछ स्पेसिफिक वर्ड होते हैं, जैसे कुछ वर्ल्ड अफेयर के लिए यूज हो रहा है, स्पोर्ट्स के लिए कुछ अलग वर्ड होता है सेम मीनिंग का. तो आपको उनके बारे में पता चलता है, जो आपको एसएसपी में मतलब आपको अच्छा इंप्रेशन होता है अगर आप उन वर्ड्स को यूज करते हो. बट मैं अगेन एक बात रिपीट करना चाहूंगा, लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर इन योर रिकमेंडेशन. अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती तो कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है. लाइक इन माई इंटरव्यू आई रिमेम्बर्ड इंसिडेंट व्हेन आई स्टक इन इंग्लिश. सो इंटरव्यूअर टोल्ड मी कि आप हिंदी में स्विच बोलिए, आप हिंदी में बोलिए. देन ही ऑल्सो आस्क्ड मी अ क्वेश्चन इन हिंदी. सो दिस इज नॉट a big hurdle in your way if you speak in little bit in Hindi, not everything in Hindi. So then after in my daily routine, I add to read motivational books. I have read around 5 to 7 books like You Can Win. Then after like Wings of Fire, हम्म. like these books. आप अगर आप इन बुक्स को रीड करेंगे तो दे विल गिव यू पॉजिटिव एनर्जी. द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, आई लाइक मैंने इस बुक को कम से कम 3 या 4 बार पढ़ चुका हूँ. द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, दिस इज अ वेरी गुड बुक. कॉन्फिडेंस ऐसे ही बूस्ट किया होगा फिर बिल्कुल इन योर डेली कॉन्फिडेंस. रूटीन. यस यस, कॉन्फिडेंस तो बूस्ट होता है, बट आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है अंदर से, फिर आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, फिर आपको वो नेवर गिव अप वाली फीलिंग आती है, तो फिर वो बुक से ही मिलेगी. बट आपको स्पोर्ट्स भी अपने डेली रूटीन के अंदर इंक्लूड रखना. इफ यू डोंट प्ले एनी टाइप ऑफ स्पोर्ट, तो ट्राई टू प्ले एनी टाइप ऑफ स्पोर्ट विच यू लाइक. आपको स्पोर्ट्स खेलोगे, फिजिकल फिटनेस वगैरह, फिर बाकी जो जैसे 15 OLQs है वो सिर्फ स्टडी करके डेवलप नहीं कर सकते आप. एसएसबी इज हम्म. नॉट टू सिट एनीवेयर एंड स्टडी फॉर अराउंड 22 hours, around 24 hours also you can't develop all these qualities. यस. आप एग्जैक्टली. जितना यस आप जितना घर से बाहर निकलोगे उतनी ज्यादा ज्यादा आप OLQs को डेवलप कर सकते हो. सो दीज आर दैट्स. दी थिंग्स. बट एक लास्ट में मैं एक डेली रूटीन के लिए एक सजेशन है मेरा. आप अपना जो भी डेली रूटीन आपको जो कंफर्टेबल लगे, जो आपके लिए अच्छा हो, आप प्रिपेयर करें. बट आपको एक चीज सब हमेशा मतलब सबसे पहले प्रायोरिटाइज करनी है कि हर एरिया में आपका एक बैलेंस डेली रूटीन हम्म. होना चाहिए. हर एरिया के अंदर आपका बैलेंस नहीं है, सो इट विल गो अगेंस्ट यू. क्योंकि एसएसपी क्यों फोर्सेस डजंट वांट अ पर्सन एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. फोर्सेस को कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन नहीं चाहिए, उनको एक पर्सन चाहिए जिसका हर एरिया के अंदर एक बैलेंस्ड काम हो, एक एवरेज पर्सन हो, एवरेज व्यक्ति हो. तो आप अगर आपका सभी चीजों के अंदर बैलेंस है तो फिर आप एसएसपी में रेकमेंड हो सकते हो आराम से.
Thank you so much, Pritam, for talking to us. I wish you luck that you should get into the merit list. Thank you, Meghna. Thank you so much.